Now, students, question number 5 from the past paper file of functions. It is from February-March 16. The question here is a function is given ax squared minus ax plus 3b. Conditions are in the first part f of minus 2. Yes, f of minus 2 is equal to f of minus 2 equals to 4a squared minus b plus 8, 4a squared minus b plus 8. Now, क्या कहा गया जनाब, फंक्शन f में अगर x की जगह -2 रखा जाएगा तो ये रिजल्ट डेवलप होगा. सो -2 रखते हैं जरा फंक्शन में. जब x स्क्वायर की जगह पर -2 रखा गया तो इट विल बी, इट विल बी 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3b equals to 4a square minus b plus 8. Now, 4a square cancel out. 2a minus 4b equals to 8. Divide the whole equation by 2. So 8 minus 2b equals to 4. Let's say this is equation 1. Are you clear? Simple. What? Minus 3b, here it is plus 4b, right? Yes. Equation 1. Is this clear? Any confusion? No, it's very simple, right? And after that, how can we make equation 2? F of minus 3 equals to 7a squared minus b plus 14. Function में x की जगह पर -3 रखना है. So the first will be 9a squared plus 3a plus 3b equals to 7a squared minus b plus 14. Now, 9a squared minus 7a squared is 2a squared. 3a plus b is 3a is here. 3b plus b is 4b minus 14 equals to 0. This is equation 2. Any confusion in equation 2? Hopefully no, right? From equation 1, if I calculate a, so it will be 4 minus 2b. I'm replacing here in equation 2 the value of a, 4 minus 2b whole squared plus 3, 4 minus 2b plus 4b minus 14 equals to 0. Now, 2 in the bracket a squared minus 2ab plus b squared by identity of a minus b whole squared plus 12 minus 6b plus 4b minus 14 equals to 0. Now, 16 multiplied by 2 is 32. Again, 16 multiplied by 2 is 32. B, 4 multiplied by 2 is 8b squared plus 12 minus 6b plus 4b minus 14 equals to 0. After that, 8b squared, then 32b with minus 6b, 38b. 38 plus 4 minus 34b, and the constant 32 minus 2 is 30 plus 30 equals to 0. What are the two values of b? Find out the two values of b. B. 3 and 5 upon 4. 3 and 5 upon 4. And if we have to calculate the value of b, a at 3 by the help of equation 1, it will be 4 minus 6 minus 2. And add 5 upon 4. What is the value of a?
Add 5 upon 4. What is the value of A? Now, at 5 upon 4, the value is 3 upon 2. So these are the values of A and B. Hopefully the question is clear. Question of 5 marks, right? After that, in the B part, in the second part, they are saying the value of A is 1 and the value of B is -1. So according to these value, what is the function? I'm just writing down the function here. A is 1, so it will be x squared. A is again 1, so it will be minus x. B is -1, so it is -3. And the domain is x is less than equals to 1 upon 2a. And what is the value of a? 1. So it is 1 upon 2. Now, we have to calculate f inverse and the domain of f inverse. The function is here. We have to calculate its inverse and the domain of inverse, right? How to calculate inverse? Inverse calculate करने के लिए अलग-अलग powers से सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो हमें क्या करना होगा? सिंगल पावर में आना होगा, और सिंगल पावर के लिए कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर के थ्रू हम वर्किंग करेंगे. कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड, यहां पर हम कोफिशिएंट कंपैरिजन के थ्रू वर्किंग कर रहे हैं. सो आई एम writing it like x squared minus x minus 3 equals to a x minus h whole squared plus k. Expansion के बाद जो चीज आती है वो हमारे जहन में, it's not necessary to show that. Just write directly. What is the value of a? The value of a is coefficient of x squared 1. The value of minus 2ah is -1. The coefficient of x. So the value of h is -1 upon -2. A is 1. So it is 1 upon 2. And ah squared plus k is -3. So the value of k is -3 minus a is 1. And h squared is 1 upon 4. So the answer will be -13 upon 4. These are the values of a, h, and k. So we can say that the function now will be, at the place of a, it is 1. X minus h, h is 1 upon 2 whole squared, and a k is -13 upon 4. Any confusion up to this? No. After that, we have to make x be the subject, right? So how can we make x be the subject? I'm saying that it will be x minus 1 upon 2 whole squared equals to y plus 13 upon 4. And x minus 1 upon 2 equals to under root y plus 13 upon 4. And x equals to under root y plus 13 upon 4 plus 1 upon 2. अब एक चीज सुनिएगा बच्चों, जब भी अंडर रूट लगता है प्लस माइनस आएगा, जब भी अंडर रूट लगेगा प्लस माइनस आएगा. लेकिन फंक्शंस में कोई सी एक वैल्यू कंसिडर की जाती है. कब? जब कंडीशंस गिवन हो. यहां पर एक कंडीशन आपको गिवन दी गई है, x इज ऑलवेज लेस देन हाफ. x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू हाफ, राइट? अगर हाफ में कोई चीज ऐड करवा दी जाएगी तो लेस देन हाफ नहीं रहेगा ये, या इक्वल टू हाफ नहीं रहेगा ये, हम ग्रेटर देन हाफ चले जाएंगे. यस और नो? अगर कोई चीज ऐड करवा दी जाए, हाफ लिखा हुआ है, हाफ में कोई चीज ऐड करवा दी जाए तो मोर देन हाफ मिलेगा हमें, राइट? जबकि हमें क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू हाफ. तो इट मींस हम प्लस यहां पर नहीं लगा सकते, वी जस्ट हैव टू टेक माइनस साइन. कि हाफ में से जब कोई चीज माइनस होगी तो लेस देन हाफ मिलेगा, हाफ में कोई चीज ऐड होगी तो लेस देन हाफ नहीं मिलेगा. तो जस्ट टेक नेगेटिव साइन हियर, राइट? सो नाउ अब हम लिख सकते हैं, दिस इज द इनवर्स फंक्शन. दिस इज द इनवर्स फंक्शन विच इज हाफ माइनस अंडर रूट x प्लस 13 over 4. अब सुनिएगा, we also have to calculate its domain. We are unable to calculate its domain directly. So sketch the function. Sketch the real function. What is the value of h? Everyone, what is the value of h? What is the value of h? It is 1 over 2. The value of h is 1 over 2,
right? The value of h is 1/2, right? क्योंकि x minus h से जब कंपेयर होता है तो माइनस माइनस प्लस. And what is the value of k? The value of k is minus 13/4. Now we have to sketch a curve from here. कहां से y axis को intersect करेंगे? -3 से. So the curve is like this. -3 से y axis को टकराए. What is the range of the function? Range of the function is greater than range of function is greater than equals to -13/4. But we need to calculate the domain. So that's why domain of inverse is greater than equals to -13/4, because range of function is equals to the domain of its inverse. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, right? Question number 6, it is from May, June 16. A simple question, solve the equation. What is the equation? F of x equals to gf2. Left hand side में composite function, right hand side में भी composite function. Left side का composite function क्या कह रहे हैं? Function f में f रख दीजिए. I am just calculating f of x. Function f में f रख रहे हैं 10 minus 3f. Function f में f रख दिया. Any confusion? No. Can I say that it will be 10 minus 3? f की जगह पर 10 minus 3x. Can I say that it will be 10 minus 3 tens are 30, 3 threes are 9x. 10 minus 30 is minus 20 plus 9x. So 9x minus 20 is fx. Are you clear? Second one. क्या कह रहे हैं बच्चों? gf2. इसके दो रूल्स हैं. क्या रूल है? या तो gf का फंक्शन निकाल के 2 रख दीजिए, या कैलकुलेट कीजिए f of 2. f of 2 is 10 minus 6 is, इसको रख दीजिए फंक्शन g में, gf2. So gf2 will be 10 upon 3 minus 2 into 4. So it will be 10 upon 4 to the 8. कितना हो गया? -5. So it is -2, right? तो इसके दो रूल हैं, या तो f2 निकालकर g के फंक्शन में रख दें, या gf फंक्शन निकालकर उसमें 2 रख दीजिए. Okay. Now the condition is f of x is equals to gf2. f of x is 9x minus 20 equals to -2. 9x equals to 18, and the value of x is 2. This is the result of question number 6. Now guys, question number 7 is here. The function f is defined by 2x plus 3 where x is greater than 0. A function f is given. बच्चों जब भी फंक्शन के क्वेश्चंस में आओ ना, ये जो साथ में लिखा हुआ होता है डोमेन या रेंज, इसको बहुत नजर में रखा करो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए. इसको नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन के आंसर्स गलत आ सकते हैं, राइट? जैसे अगर लास्ट क्वेश्चन में मैं इसको नहीं देखता तो मैं प्लस माइनस लगा देता उसको, जबकि लिखा हुआ था लेस देन हाफ रहना है, तो माइनस सेलेक्ट किया गया, तो 1 मार्क डिडक्शन थी वहां पर, राइट? तो इन चीजों को जरूर देखना है. आगे जी का फंक्शन आपको दे दिया गया, इसमें आपको डोमेन जो दी गई है वो अननोन डोमेन है, और इसी के साथ एफ जी का फंक्शन कॉम्पोनेंट दे दिया गया, इसकी डोमेन भी अननोन डोमेन है, लेकिन दोनों की डोमेन सेम है, फंक्शन जी की और फंक्शन एफ जी की. कॉम्पोनेंट फंक्शन और जी की डोमेन सेम है. आगे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. Find the values of a and b. How to calculate the values of a and b? We have a function fx, we have a function gx. इन दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शन आपको गिवन दिया गया है. तो अगर मैं कैलकुलेट करूं इन द फर्स्ट पार्ट द फंक्शन एफ जी, if I calculate the function fg, then the function fg will be g को रख दे फंक्शन f में. Can I say that it is 2g plus 3?
Yes or no? Yes or no? Now, what is the function g? It is ax squared plus b plus 3. Can I say that it is 2ax squared plus 2b plus 3? हमने जो फंक्शन बनाया वो क्या बना? 2ax स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3. ऐसा ही एग्जामिनर कह रहा है कि ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है 6x स्क्वायर माइनस 21. एग्जामिनर क्या कह रहा है? ये फंक्शन है 6x स्क्वायर माइनस 21. एग्जामिनर के कहने का मकसद क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 होगा और कांस्टेंट -21 होगा, राइट? एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? 2a. Can I say that 2a equals to 6? So the value of a is 3. Can I say that 2b plus 3 equals to -21? So the value of b is -21 minus 3 is -24. And -24 divided by 3 is -12 divided by 2, -12, right? So these are the values of a and b. Hopefully there is no confusion in this now, right? After that, in the second part, find the greatest possible value of q. We need to calculate the greatest possible value of q. हमें q की greatest possible value calculate करना है, right? Now, the second part, find the greatest possible value of q. बेटा q का लिंक कॉम्पोजिट फंक्शन से भी है और g के फंक्शन से भी. और कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है? एफ जी. कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है? एफ जी. याद रखिएगा, जब भी कॉम्पोजिट फंक्शन की बात हो एफ जी, उसकी रेंज डोमेन कैसे निकलती है सुनिएगा. क्या फंक्शन है? एफ जी. एफ जी. तो चलेंगे कहां से? फंक्शन जी से. और पहुंचेंगे कहां? फंक्शन एफ पर. ना, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे डोमेन ऑफ जी एंड रेंज ऑफ फंक्शन जी. Domain of g and range of g, right? What is the domain of function g? The domain of function g is q. The domain of function g is q. q को रख दीजिए g के फंक्शन में, तो you will get the range of function g. ऐसा ही. And what is the range of function g? The range of function g will be aq square plus b. But we have the values of a and b. So it will be 3q squared plus -12. Clear? After that, g function जिसको रखा गया उसकी डोमेन रेंज आ गई. अब फंक्शन f की डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कशन हो रहा है. फंक्शन f की डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कशन हो रहा है, राइट? अब देखिए रूल सुनिएगा. अगर मैं कॉम्पोजिट फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे आती है? जो फंक्शन रखा गया उसकी रेंज कंसीडर होगी जिस फंक्शन में रखा जाएगा उसकी डोमेन. सो 3q स्क्वायर -12 इज हियर. ये डोमेन बन गई किसकी? फंक्शन f की. ये डोमेन बन गई किसकी? फंक्शन f की. जो फंक्शन रखा जाएगा उसकी रेंज जिसमें रखा जाएगा उसकी डोमेन बन जाएगी. और इस डोमेन को जब फंक्शन f में रखा जाएगा तो फाइनली जो रेंज डेवलप होगी वो किसकी रेंज आएगी? वो फंक्शन एफ जी की रेंज आएगी. किसकी रेंज आएगी? एफ जी कॉम्पोजिट फंक्शन की रेंज आएगी. ठीक हो गया? हमसे क्या कहा गया है? कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू. कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू. अब सुनिएगा, जी की डोमेन क्यू, जी की रेंज दिस, एफ की डोमेन 3q स्क्वायर -12. लेकिन जब हमने देखा तो एफ की तो डोमेन आपको गिवन दी गई है.
which is greater than equals to 0. तो यहां पर क्या मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस कि 3q² minus 12 is greater than equals to 0. Yes or no? Now, can I say that q² is greater than equals to 4? Critical values. Can I say that q is plus minus 2? Can I say that q is beyond minus 2 and 2? Beyond means if this is 0, here 1, here 2, here minus 1, here minus 2. Beyond means more than 2 and less than minus 2. We need to calculate the greatest value of q. If we consider this portion, 2 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी 3, फिर कौन सी वैल्यू आएगी 4. According to this portion, 2 is the smallest value. And if we consider this portion, minus 2 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी minus 3, फिर कौन सी वैल्यू आएगी minus 4. According to this, minus 2 is the greatest value. And we need to calculate the greatest value of q. Therefore, the value of q is minus 2. Therefore, the value of q is minus 2. Are you clear? Any confusion? No. That's great. आगे चलिए. It is now given that q is minus 3. Find the range of fg. The fg function is 6x squared minus 21, where q is less than equal to minus 3. Where q is less than equal to minus 3. I am sketching this function. It's a quadratic function. We can compare it with ax minus h whole square plus k. लेकिन 2ah तो हमारे पास है ही नहीं, इसमें दरमियान वाला तो टर्म है ही नहीं. तो a की वैल्यू क्या है 6. a की वैल्यू क्या है 6. y इंटरसेप्ट को कहां टकरा रहा है -21. डायरेक्टली स्केच कर रहा हूं मैं -21. a is 6, so it will be a minimum curve. It will be a minimum curve. So it's like this. So it's like this. Any confusion? Any confusion? No. ये कर्व तो हमने बनाया उस वक्त, ये कर्व तो हमने उस वक्त बनाया कि जिस वक्त कोई x की वैल्यू को हमने नोटिस नहीं किया. अब x की वैल्यू को नोट करते हैं. When x is -3, when x is -3, so now अभी तो ये जो मैंने शेप बनाया है ये x की वैल्यू को कंसीडर नहीं किया. कुछ भी x हो हमने कर्व बना दिया. लेकिन देखा हमें तो कर्व बनाना है लेस देन इक्वल टू -3 पर. तो अब जरा -3 रखिए एफजी में. क्या आंसर आ रहा है बताएंगे. -3 रखने के बाद -33 आंसर आ रहा है 33. जब -3 रखा जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा 33. जनाब हियर इट इज -3. लेट्स से -3 के ऊपर क्या बन रहा है बच्चों 33. हमें लेस देन -3, -4, -5 कर्व बनाना है. राइट. तो इट मींस जो एक्स्ट्रा कर्व है उसको मैं रिमूव कर रहा हूं. ये कर्व रिमूव हुआ, ये रिमूव हुआ कर्व, ये रिमूव हुआ कर्व. ये जनाब कर्व कहां से बनना स्टार्ट हुआ है -3 से. और अब ये कर्व बनता जाएगा. अब ये कर्व बनता जाएगा लाइक ये कर्व बनता जाएगा -3 से अप टू इनफाइनाइट. तो रेंज क्या नजर आई. व्हाट इज द रेंज. रेंज नजर आई जनाब. फाइंड द रेंज ऑफ एफ जी. रेंज नजर आई जनाब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33. वाई एक्सिस में कर्व कहां नजर आ रहा है हमें 33 से ऊपर, मोर देन 33. आर यू क्लियर अबाउट दिस. एनी कंफ्यूजन. नो. नाउ after that find the expression of fg inverse
we have to calculate the expression of FG inverse. So y equals to 6x squared minus 21. We need to calculate its inverse. X squared equals to y plus 21 divided by 6. And x equals to under root y plus 21 divided by 6. अंडर रूट जैसे ही आएगा प्लस माइनस आएगा. अब इसमें देख के बताइए प्लस कंसीडर होगा कि माइनस. क्यों? क्योंकि ओके माइनस कंसीडर होगा. रीजन क्या है? आप डायग्राम देखिए जरा. हमारा कर्व इधर चल रहा है ना नेगेटिव एक्स की तरफ, पॉजिटिव में तो जा ही नहीं रहा. तो जनाब सिर्फ माइनस कंसीडर होगा. तो एफ जी इनवर्स क्या निकल कर आया? इट इज माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 21 डिवाइडेड बाय 6. डोमेन ऑफ एफ जी इनवर्स, रेंज आपने एफ जी की बता दी है, तो डोमेन इसकी वही हो जाएगी जो रेंज है एफ जी की. आर यू क्लियर? एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 7? नो. Now, students, question number 8. It is from October, November 16, paper 1-1. The two functions are here. Find and simplify an expression for fgx. We need to find the expression fgx. So now, fg means function f में g रख दीजिए. So fg is function f में g रखा जाएगा. 4 divided by g minus 2. So it will be 4 divided by, what is g? 4 upon 5x plus 2 minus 2. 4 and 4 cancel out. 5x plus 2 minus 2. And the answer is 5x. This is function fg. Are you clear? State the range of the function. It's a straight line function. Straight line function है. अगर मैं इसको स्केच करूं तो ये दो बहुत आराम से स्केच हो जाएगा. स्ट्रेट लाइन फंक्शन है. आप लोग जरा मुझे बताएंगे. When x is 0, what is y? 0. When x is 1, what is y? 5. Like this and so on. ये एक ऐसा फंक्शन बना, राइट. 0 से हम पीछे नहीं जा सकते क्योंकि यहां पर हमें ब्लॉक किया हुआ है कि 0 से पीछे नहीं जाना, राइट. x is greater than 0. So now, what is the range of fg? What is the range of fg? The range is greater than what? 0. रेंज क्या होगी? हमें y एक्सिस में फंक्शन कहां नजर आ रहा है? 0. ग्रेटर देन 0 नजर आ रहा है हमें. ये फंक्शन आ रही है बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? यस. हाँ लगा. कोई प्रॉब्लम? Now, after that, in the second part, find an expression of g inverse. G का inverse निकालिए. So y equals to 4 upon 5x plus 2. Cross multiplication 5x plus 2 equals to 4 upon y. And 5x equals to 4 upon y minus 2. And x equals to 4 upon x. Sorry. 4 upon 5y minus 2 upon 5. Therefore, g inverse is 4 upon 5 x minus 2 upon 5. आ रही है बात समझ में? Find out its domain. We are unable to calculate domain directly. So, I'm calculating the range of the function g. Right? अगर 0 रख दूंगा मैं इसमें तो रेंज आ जाएगी. अगर 0 रख दिया जाएगा, अगर मैं इसको स्केच करता हूं
अगर मैं इसको स्केच करता हूं तो सुनिएगा, सुनिएगा बच्चों, जी फंक्शन स्केच हो रहा है। When x is 0, what is the value of g? When x is 0, what is the value of g? 2. जब x 0 है, फंक्शन g की वैल्यू क्या आ रही है? 2. When x is 0. And when y is 0, what is the value of x? अगर ये 0 हो जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इक्वल्स टू 4, मतलब नॉट पॉसिबल। क्या हुआ? ये फंक्शन ऐसे बनेगा कि ये एक्स एक्सिस से टकराएगा नहीं, ये एक्स एक्सिस से फंक्शन टकराएगा नहीं और इससे पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि y कभी 0 नहीं हो पा रहा है। y कभी 0 नहीं हो पा रहा, तो पता ये चला ये फंक्शन नहीं टकराएगा किससे? एक्स एक्सिस से। रेंज का मतलब क्या होता है? फंक्शन हमें वाई एक्सिस में कहां नजर आ रहा है। रेंज का मतलब क्या होता है? फंक्शन हमें वाई एक्सिस में कहां नजर आ रहा है। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी क्या होगी? 0 से ज्यादा और लेस देन इक्वल टू 2। क्या मतलब? 2 से लेकर यहां तक ये रेंज हो गई, लेकिन 0 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। मोर देन 0 अप टू 2। रेंज अगर ये है तो क्या मैं लिख सकता हूं? देयरफॉर डोमेन ऑफ जी इनवर्स क्या हो गई बच्चों? 0 से लेकर 2 तक। आर यू क्लियर? हमने रेंज कैलकुलेट कर ली, उसके अकॉर्डिंगली डोमेन लिख दी गई। Now, what we have in this question number 11, a function is given. Find the set values of p for which the equation has no real roots. No real roots means discriminant is less than 0. So now, first part, 2x squared minus 6x plus 5 equals to p, 2x squared minus 6x plus 5 minus p equals to 0, discriminant less than 0, b square minus 4ac. What is the value of b? What is the value of a? What is the value of c? 36 minus 4 to the 8 and 5 8s are 40 and plus 8p less than 0, 8p is less than 4 and the value of p is less than 1 upon 2. Are you clear? Now, second part, express in this form. Express the function gx in the given form. करते हैं जनाब. The gx function is this: 2x squared minus 6x plus 5 equals to, in this form, ax squared minus 2abx plus ab squared plus c. What is the value of a? What is the value of a? 2. Minus 2ab. What is the value of minus 2ab? Minus 6. So b is equal to minus 6 divided by minus 2 and a is 2. Minus minus cancel. 2 3s are 6. 3 upon 2. And ab squared plus c is equals to 5. What is the value of c? 5 minus a. B squared is 9 upon 4. Cancel out 2 2s are 4, 5 2s are 10, 1 upon 2 is C. Right? Now, so can I say that this is y is equals to, बच्चों ये आपने लिख दिया ABC, मार्क्स मिल गए आपको, राइट? लेकिन अगर इसको फॉर्म में भी लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2x plus 3 upon 2
होल स्क्वायर प्लस 1/2। मैंने इस वजह से फॉर्म में लिखा क्योंकि आगे मैंने देखा रेंज, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये चीजें मालूम करनी है। तो बच्चों जब भी कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर फॉर्म आए, आप इसको स्केच कर लिया करें। क्या कर लिया करें? स्केच कर लिया करें। अब जरा मैं स्केच कर रहा हूं, सुनिएगा। अब जरा मुझे आप लोग बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? स्केचिंग किससे होती है? y इक्वल टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? -3/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? हाफ 1/2। कहां से टकराएंगे y एक्सिस को? 5 से टकराएंगे y एक्सिस को। 5 से टकराएंगे y एक्सिस को, राइट। ये टकराए हम 5 से y एक्सिस को। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यस। अब आप देखिए, कर्व स्केच कर लिया। अब आ रहे हैं हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ, पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या कहा गया? फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या रेंज नजर आ रही है आप लोगों को? यस, आवाज आए? क्या रेंज नजर आ रही है? फंक्शन स्केच किया हुआ है। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। बिल्कुल गलत। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? जब भी आप सॉल्व करें फंक्शन का, तमाम चीजें पढ़ें। डोमेन क्या लिखी हुई है? 0 से लेकर 4 तक। डोमेन क्या लिखी हुई है? 0 से लेकर 4 तक। ओके स्टूडेंट्स, इन पार्ट 2 there's a change here. When I expanded this ax plus b whole square plus c, then it will be plus 2ab. And if this is plus 2ab, then it will be minus 3/2. And so it will be minus 3/2. Therefore, the value of h is 3/2. And the curve is like, this is the turning point. The curve is like this and this. Are you clear? This is the correct diagram. माइनस हम मिस कर गए थे, राइट। अब आइए इन द थर्ड पार्ट। इन द थर्ड पार्ट आपसे पूछा व्हाट इज द रेंज। अब आप देखिए, आपने बताया द रेंज इज ग्रेटर देन हाफ। द रेंज इज ग्रेटर देन हाफ बिकॉज आपने ये x नहीं देखा। अगर ये x ना होता तो रेंज इज ग्रेटर देन हाफ, बिल्कुल सही है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x रेंज इज ग्रेटर देन हाफ, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि कर्व कहां से कहां तक बनाना है। कर्व बनाना है 0 से लेकर कहां तक? 4 तक बनाना है कर्व। 0 से लेकर कहां तक बनाना है कर्व? 4 तक। तो बेटा 0 पर y की वैल्यू क्या आ रही है? 5। 4 पर जरा मुझे y की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। और y की वैल्यू क्या मतलब? फंक्शन में x की जगह पर रखो 4, क्या आंसर आ रहा है बताइए? फंक्शन में x की जगह पर 4 रख के आंसर बताइए। 13। तो पता ये चला 4 पर क्या वैल्यू आ रही है? 13 आ रही है। 4 पर क्या वैल्यू आ रही है? हमारा कर्व सिर्फ इतना ही बन सकता है, इससे ज्यादा कर्व नहीं बन सकता, क्योंकि हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 0 से 4 तक कर्व बनाइए। अब आप लोग डायग्राम देख के आराम से मुझे रेंज बता सकते हैं। व्हाट इज द रेंज नाउ? वाई एक्सिस में कर्व कहां से कहां तक नजर आ रहा है? एग्जैक्टली कहां से कहां तक नजर आ रहा है कर्व? एग्जैक्टली ये जनाब कर्व है। कहां से स्टार्ट हुआ? हाफ से स्टार्ट हुआ। कहां तक बना? 13 तक बना। सो द रेंज इज, सो द रेंज इज हाफ टिल 13। आर यू क्लियर? दिस इज द रेंज। अब आप देखिए,
डायग्राम बनाने से हर चीज सामने नजर आ रही, राइट? तो डायग्राम बना लिया करें, कर्व स्केच कर लिया करें। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के फॉर विच एच हैज इनवर्स। इनवर्स के बारे में आप लोगों को बताया गया था, ऑल द पैराबोलिक कर्व्स आर 1 1 up to the turning point and after the turning point. And what is the turning point here? 3/2 turning point, the value of h, turning point का x axis 3/2, यहां तक inverse possible होता है. So what is the value of k? The value of k is 3/2. हमेशा जब पूछे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां तक इनवर्स पॉसिबल है, टर्निंग पॉइंट तक इनवर्स पॉसिबल होता है, एक्सट्रीम वैल्यू तक इनवर्स पॉसिबल होता है, उसके एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखना होती है. आर यू क्लियर? नाउ फिफ्थ वन. Actually, here k is not the y axis. Here k is this. Here k is this. It is not the y axis. ये वो वाला h के वाला k नहीं है, right? Now, h inverse. We need to calculate h inverse. How to calculate? Y equals to 2x minus 3/2 whole square plus half. इनवर्स निकालते वक्त एक मिस्टेक करूंगा, आप लोग बताएंगे मुझे, राइट? सुना, x minus 3/2 whole square equals to minus half, y minus half. Now x minus 3/2 whole square equals to y/2 minus y/2 minus 1/4 and x minus 3/2 equals to under root y/2 minus 1/4 plus minus. So x equals to under root y/2 minus 1/4 plus 3/2. This is the inverse. Yes or no? प्लस का साइन लगेगा, क्यों? Exactly. X is greater than 3/2. X is greater than 3/2. तो यहां पर नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव कंसीडर होगा. That's great. So now, अब हम कह सकते हैं H inverse is under root x/2 minus 1/4 plus 3/2. Are you clear? Hopefully there's no confusion in the question. Now, question number 12, it is from May June 15. Question पढ़ रहा हूं मैं. क्या कहा गया? A function is given. A function is given. जब देखा तो पता चला नहीं, फंक्शन गिवन नहीं है, इट्स एन इनवर्स. And we have to calculate in the first part the function. इनवर्स गिवन है, फंक्शन निकालना है, कोई मसला थोड़ी है. फंक्शन गिवन हो, इनवर्स निकालो, तो वही y इक्वल करके x को सब्जेक्ट बनाओ. इनवर्स गिवन हो, फंक्शन निकालो, तो वही रूल. सही है, बस नाम आगे पीछे कर दिया इन्होंने. इट्स नथिंग एल्स, राइट? द रूल इज सेम फॉर बोथ. So in the first part, find an expression of fx. It means we need to calculate the inverse of the inverse function. Upon 2x, cross multiply 2xy equals to 1 minus 5x. 5x इधर आएगा, 2xy plus 5x equals to 1. X common, so 1/2y plus 5.
So this is inverse function means the function f. 2x plus 5. बेटा x कॉमन लिया तो क्या बचा ब्रैकेट में 2y plus 5 पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. So any confusion in this? Hopefully no. Now after that we need to calculate the domain of function. फिर वही सिलसिला हो गया कि डोमेन इसकी निकालें. डोमेन निकालना मुश्किल हो जाता है तो हम रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं अपने फंक्शन की. पहले जो गिवन फंक्शन है, अभी इनवर्स है क्या है सब छोड़ दो, जो गिवन फंक्शन है उसकी रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं. हाउ टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन जरा देखिएगा बच्चों. दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन. नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द रेंज, राइट. व्हेन x इज 0, व्हेन x इज, डोमेन को फंक्शन में रख दो, रेंज आ जाएगी. When x is 0, जब 0 रखा गया तो f inverse of 0, 1 minus 0 upon 0, it is infinite. क्योंकि anything divided by 0 is infinite. And when f inverse of 2, so it will be 1 minus 10 over 4. So it will be minus 9 upon 4. पता ये चला इसकी रेंज यहां पर क्या आएगी -9/4. और ऊपर कहां तक जाना है हमें, इनफाइनाइट तक. तो रेंज क्या हो गई इस फंक्शन की, ग्रेटर देन -9/4, ग्रेटर देन -9/4, ग्रेटर देन -9/4. तो अगर इसकी रेंज ग्रेटर देन -9/4 है तो क्या मैं कह सकता हूं डोमेन ऑफ द फंक्शन is greater than equals to -9/4. ये आपके पास डोमेन आ गई क्योंकि फंक्शन की रेंज इनवर्स की डोमेन. इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन? आ रही बात समझ में? नाउ द नेक्स्ट वन, सेकंड पार्ट. द फंक्शन g is defined by this. Find f inverse of g. f inverse में g रख दीजिए. f इनवर्स की रहा, g रखते हैं इसमें 1 minus 5g divided by 2g. Now 1 minus 5, g is 1 upon x, so it is 5 upon x divided by क्या है 2 over x. ऊपर एलसीएम लिया गया तो x minus 5 upon 5 divided by 2 अपॉन x. जो ऊपर और नीचे का था वो कैंसिल हुआ तो क्या बनकर आ गया f इनवर्स ऑफ g x minus 5 upon 2, x minus 5 upon 2. आगे क्या कह रहे हैं, गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ax plus b. सो एलसीएम ब्रेक करके लिखिए 1 upon 2x minus 5 upon 2. So therefore what is the value of a? The value of a is 1 upon 2. And what is the value of b? It is -5 upon 2. Are you clear? Hopefully there is no confusion in this question. Okay students, question number 13 here. In the first part, minus x squared plus 6x minus 5, we have to write in this form. So ax squared plus 2abx plus ab squared plus c. What is the value of a? -1. What is 2ab? 6. So what is the value of b? 2 and -1? It is -3. And what is ab squared plus c? Equals to -5. What is the value of c? -5 minus a is -1. And here it is 9. So it will be 4. Right? Now, after that, I am sketching the function. Function को मैं लिख रहा हूँ y equals to a is -1, x, b is -3, whole squared plus 4. Sketch करते हैं function को. What is the value of h?
3. The value of h is 3. What is the value of k? 4. The value of k is 4. Intersection कहाँ हो रहा है इसका? -5 पर. Here it is -5. Now, अब आपसे कहा गया state the smallest value of m for which the function is 1, 1. The value of m is 3. Turning point का x coordinate. Turning point का x coordinate. आगे क्या कहा गया? In the third part. In the third part, find an expression of f inverse. So y equals to minus x minus 3 whole square plus 4. X inverse calculate करना है तो it will be x minus 3 whole square equals to 4 minus y, and x minus 3 equals to under root 4 minus y, and x equals to under root 4 minus y plus 3. हमें 3 से m की वैल्यू क्या है? 3. हमें 3 से ज्यादा रहना है, सो प्लस का साइन आ गया यहां पर. अगर 3 से कम रहना होता तो माइनस का साइन आ जाता. सो therefore f inverse is under root 4 minus x plus 3. Are you clear? And after that we have to calculate its domain. तो मैं रेंज लिख रहा हूं डायरेक्टली. नाउ स्टॉप वर्किंग ऑल ऑफ यू, जस्ट लुक एट द बोर्ड. Range of the function. Range of the function. What is the range of the function? What is the range of the function? क्या? What is the range of the function? Less than equals to 4. Therefore, can I say that the domain of inverse is less than equals to 4. Any confusion? But the confusion here is this, जिसको मैंने यहां पर hidden कर दिया था. What is the value of m given? 5. And what is m? Basically x. What is the value of x given? X equals to 5. हमें x equal to 5 के बाद से फंक्शन बनाना स्टार्ट करना. ठीक हो गया? तो जरा चेक करते हैं. अगर x की वैल्यू 5 होती है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन? 0. x की वैल्यू 5 यहां पर हो रही है. x की वैल्यू 5 यहां पर हो रही है. हमें x की वैल्यू 5 के बाद से चेक करना है फंक्शन. तो जनाब x की वैल्यू 5 के बाद से अगर फंक्शन चेक होगा तो वो तो ये वाला फंक्शन होगा ना. ऊपर वाला तो फंक्शन होगा ही नहीं, कंसीडरेशन में आएगा. तो इस येलो फंक्शन की रेंज क्या नजर आ रही है? लेस देन इक्वल टू 0 नजर आ रही है. रेंज होती है y एक्सिस, तो लेस देन इक्वल टू 0. तो therefore domain is also less than equals to 0. This is the answer for third part. Are you clear?